कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के चौथे यूनिट के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, पहले देख लेते हैं कि चौथे यूनिट के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, फिर हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चौथे यूनिट के अंदर आपको इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है, जो आपका चैप्टर का नाम है वो क्या है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आरडीए और डाइट प्लान पढ़ना है। 3 टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो पहले न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन अ वुमेन्स लाइफ. Proper nutrition during this stage is essential for the health of both the mother and the developing fetus. Adequate intake of macronutrients and micronutrients supports the growth of the fetus, the development of maternal tissues, uterus, placenta, breast, and prepares the mother for labor and lactations. Malnutrition during pregnancy can lead to complications such as low birth weight, anemia, preeclampsia, or delayed development of the baby. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स डिमांड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. एक्स्ट्रा कैलोरीज आर नीडेड टू सपोर्ट fetal growth, amniotic fluid production, and maternal tissues expansion. Protein is required for new tissue synthesis. Micronutrients like iron, folate, calcium, iodine, and vitamin D are crucial for fetal development. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर प्रेगनेंसी के बारे में। तो एनर्जी कितना ज़रूरत होता है, 350 कैलोरी पर डे प्लस 2/3 टैम्स्टन. प्रोटीन 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, नियरली 70 to 75 ग्राम पर डे. आयरन 35 to 40 मिलीग्राम पर डे टू प्रिवेंट एनीमिया. फोलिक एसिड 600 माइक्रोग्राम पर डे टू प्रिवेंट न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट्स. कैल्शियम 1200 मिलीग्राम पर डे. विटामिन डी 600 IU पर डे. आयोडीन 250 माइक्रोग्राम पर डे. जिंक 12 मिलीग्राम पर डे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सैम्पल डाइट प्लान फॉर प्रेगनेंसी। तो पहला ब्रेकफास्ट तो होल ग्रेन प्रोडीजी विथ मिल्क, बॉइल्ड एग, फ्रूट, बनाना, ऑरेंज. मिड मॉर्निंग हैंडफुल फॉर नट्स एंड ग्लास ऑफ फ्रेश जूस. लंच के अंदर चपाती, ब्राउन राइस, दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, कर्ड एंड चिकन, फिश और पनीर. इवनिंग स्प्रोट्स, चाट और वेजिटेबल सैंडविच विथ मिल्क. डिनर खिचड़ी और राइस विथ दाल, कुक्ड वेजिटेबल, पनीर, टोफू एंड सलाद. ठीक है, बेड टाइम अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क. Pregnant women should avoid junk food, excessive caffeine, alcohol, and unpasteurized dairy. Small, frequent meal with plenty of food help reduce nausea and constipation. Next, nutrition during lactation. So, lactation is a period when the mother produces breast milk to feed the newborn. Nutrition during this stage is extremely important as it directly influences the quantity and quality of breast milk, which is the sole source of nutrition for infants in the first 6 months. Breastfeeding also increases the mother's nutritional demand and energy and nutrients and long through milk production. नेक्स्ट इसके अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो लैक्टेटिंग वुमेन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स. The quality of breast milk is affected more by natural nutrition than its quantity. Adequate intake of calcium, vitamin D, vitamin B12, iodine, and omega-3 fatty acid is crucial for infant brain development and both bone health. Hydrogen play a major role in milk secretion. Next,
RDA, that is recommended daily allowance for lactation to energy, plus 550 kilocalorie per day first 6 months, plus 400 kilocalorie per day after 6 months. Protein nearly 70 to 80 gram per day. Calcium 1200 to 1500 milligram per day. Iron 15 milligram per day. Lower than pregnancy but still required. Vitamin A 950 microgram per day for infant vision and immunity. Vitamin D 600 to 800 micro IU per day. Iodine 252 to 70 microgram per day. Omega 3 fatty acids, DHA, EPA essential for the infant brain and eye development. Next, simple diet plan for lactation. First, breakfast to milk with oats, boiled egg, seasonal fruit. Mid-morning, dry fruit, almond, walnut, raisins and buttermilk. Next, lunch to whole wheat chapati or brown rice, dal, green leafy vegetables, paneer, chicken or fish, salad, curd. Evening, vegetable upma, sprouts or stuffed paratha with tea or milk. Dinner, khichdi, chapati, dal, mixed vegetables, soup, tofu or paneer. Bedtime, glass of turmeric milk or dry fruit milk. Special considerations to adequate water intake 2.5 to 3 liter per day to maintain milk flow. Avoid alcohol, smoking and excessive caffeine as they pass into breast milk. Include iron-rich food and vitamin C to prevent postpartum anemia. Frequent nutrient-dense meals are recommended to combat fatigue. A balanced diet during lactation ensures proper nourishment of the mother and the optimum growth and immunity for the baby. ठीक है.